गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ करीना और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप सभी ने डोरेमोन तो देखा ही होगा, उसके गैजेट्स के बारे में भी आपको पता होगा। अब आज की इस क्लास में मैं आपको 5 ऐसे गैजेट्स बताऊंगी जो हमारे फ्यूचर में काम में आने वाले हैं और जो फ्यूचर में हम लोग यूज़ करेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन्स यूज़ करेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। So welcome to an exciting journey into the future of technology. This presentation will unveil 5 cutting-edge gadgets that are not only transforming daily life but also poised to reshape entire industries. We'll explore innovation projected to contribute to a $500 billion market by 2025. So, the gadget number 1 is augmented reality, AR glasses. हमारे पास इस तरह के ऑगमेंटेड रियलिटी वाले ग्लासेस होंगे जिसका क्या काम होगा, इससे आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टेड टू रीच एन $88.4 बिलियन मार्केट बाय 2020। AR glasses like Microsoft HoloLens, Magic Leap 2, Apple Vision Pro offer real-time data overlays and interactive 3D models. They are set to potentially replace smartphones with truly immersive experiences in everyday life. Enhanced productivity. These devices significantly boost productivity with studies showing a 32% increase in the field service application, and they also reduce errors by 27% in manufacturing processes, demonstrating their practical utility across various industries from gaming and navigation to remote assistance and training. Second gadget है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI बोलते हैं इसको। रीस्टोर फंक्शनैलिटी, ये फंक्शनैलिटी को रीस्टोर करता है। BCIs आर एक्सपेक्टेड टू रीच $3.3 बिलियन मार्केट बाय 2030 with companies like Neuralink, Synchron leading the way. These innovations enable paralyzed patients to control prosthetic limbs and hold the potential to restore motor functions and cognitive abilities, revolutionizing medical rehabilitation. Beyond medicine, beyond medical application, BCIs are exploring use case in gaming, communication, advanced control system while offering incredible possibilities. Exoskeletons. Exoskeletons भी क्या है, एक थर्ड हमारा टूल है। The exoskeletons market is projected to reach $4.8 billion by 2028, encompassing powered, passive and soft exosuits. These wearable robotic devices are finding critical application in rehabilitation, construction, military and logistics, enhancing human capability across various sectors. Human augmentation होगा इससे। Exoskeleton significantly reduce muscle fatigue by 60% in industrial settings and increase lifting capacity by 40% of workers. इससे क्या होगा, इन्होंने ये ड्रेस पहन के इनके जो हाथ है वो ऑटोमेटिकली एज अ रोबो वर्क करेंगे, तो इससे इनका वर्कर्स का जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो बच जाएगी। टूल नंबर 4, क्वांटम कंप्यूटर्स. Quantum computing is poised to revolutionize computation with its market expected to reach $8.6 billion by 2027. Leading companies like IBM, Google, Microsoft are developing these machines to solve complex problems currently beyond the reach of classical computers, revolutionizing fields. These powerful computers hold the potential to break current encryption algorithms, enabling new frontiers in cryptography, and they can also accelerate drug discovery, allowing for faster development of new medications and personalized medicine approaches. Solving complex problems. In material science, quantum computers can simulate molecular interactions with unprecedented accuracy, leading to the creation of new materials. They also offer significant advantages in finance for optimizing complex models and managing risk with greater precision. Bioprinting. The fifth tool is bioprinting. बायोप्रिंटिंग में टिश्यू इंजीनियरिंग आता है। बायोप्रिंटिंग इज सेट टू रीच 1.8 बिलियन मार्केट बाय 2028. लीडिंग द वे इन टिश्यू इंजीनियरिंग, दिस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स प्रिंटिंग फंक्शनल ह्यूमन टिश्यूज़ को प्रिंट करेगा, ऑर्गन्स को प्रिंट करेगा, ऑफरिंग अ रिवॉल्यूशनरी सोल्यूशन टू द ग्लोबल ऑर्गन शॉर्टेज एंड पोटेंशियली एलिमिनेट ट्रांसप्लांट वेटिंग टिश्यूज़. ड्रग डेवलपमेंट.
This innovative field also plays a crucial role in drug testing, enabling personalized drug screening, especially for complex conditions like cancer. By reducing the need for animal testing, bioprinting can significantly accelerate drug approval processes, bringing new therapies to patient faster. Regenerative medicine देगा. Bioprinting stands at the forefront of regenerative medicine and creating biological constructions for repairing, replacing damaged tissues को construct करेगा. Honorable mention flying cars भी आ जाएगी. The projected market for flying cars is expected to reach 36.83 billion by 2023. और नैनो बोट्स आ जाएंगे. करंट मार्केट इसका है 9.4 बिलियन और प्रोजेक्टेड ग्रोथ में 21 बिलियन तक ही जा सकता है. फ्यूचर इज़ नाउ. द इनोवेटिव गैजेट्स वी हैव डिस्कस टुडे are not merely concept, they are real emerging technology that are already beginning to transform industries and lives across the globe. From augmented reality blurring to lines between digital and physical to nanobots revolutionizing medicine, pace of technology advancement is unprecedented. So if you have any question you can ask me. Otherwise, for these kind of interesting videos, keep subscribing, keep following Softline Institute. आज की क्लास में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.